Hello friends, Namaskar dosto. Very warm welcome to another edition of Sunday Analysis with SD. And I'm SD Shanando Das. I'm a multi-asset trading and investment specialist. ये जो Sunday Analysis है इसमें हम लोग भी discuss global macro, कैसा होना चाहिए आपका portfolio. So thank you very much everyone for watching this video with me, and special thanks to members. And as a token, ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए पहले रिलीज होगा देन टू द अदर पब्लिक. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एज अ मेंबर. सो चलिए लेट्स स्टार्ट. हम लोग कहां से चालू करते हैं? वी स्टार्ट यूजुअली विद द प्रीवियस वीक का जो डेटा आया था, इंपॉर्टेंट डेटा. और प्रीवियस वीक इंपॉर्टेंट डेटा वी लुक ओनली द 3 स्टार्स. सो संडे से चालू हुआ था डेटा का आना. दैट वाज फर्स्ट वाज द पीएमआई. फर्स्ट वीक इज यूजुअली द पीएमआई डेटा वीक. One of the most important PMI readings जो आया था, that was the China का manufacturing PMI, which showed recovery दिखाया. लोग expect नहीं कर रहे थे चाइना का, तो immediately एक bullish mood set हो गया in the morning in the beginning for the metals and the commodities. China एक बहुत important factor होता है in commodities. Then उसको और बढ़ावा मिला. Then when Monday another data was released, चाइना का जो सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग का जो काइक्सिंग का आता है एक ऑफिशियल, then you can think of somewhat private, it also showed expansion. US का showed expansion, so metal got somewhat boosted. Commodity in the very beginning of the week उनको एक boost मिल गया. नेक्स्ट जो मेजर इंपॉर्टेंट डेटा था, दोज आर फ्रॉम यूरोप. जो इन्फ्लेशन डेटा था फ्रॉम जर्मनी एंड यूरोप, both the eurozone. So both the case we saw that Europe inflation is falling. German inflation drop was quite strong, and that started affecting the euro saw a downside pressure. बट वो डाउन साइड प्रेशर एलिवेट हो गया. डॉलर इंडेक्स जो अपसाइड पुश मिल रहा था वो एलिवेट हो गया with the Fed chair Powell का जो hint that still we are on the similar path of a rate cut. But further जो data release हुआ, like ADP employment number था, then we had the main non-farm payroll या unemployment report of the US. Both showed strong numbers, and more importantly अंडरलाइन कुछ वीकनेस तो था ही कि परमानेंट जॉब क्रिएशन में स्लो डाउन, और जो मोर इमिग्रेंट जॉब्स आर गेटिंग मोर क्रिएटेड देन रेसिडेंट जॉब. सो देयर आर सर्टेन इश्यूज डेफिनेटली है पेरोल के, बट ओवरऑल एक बहुत ही हेडलाइन स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स मिला फॉर द यूएस. एंड ओनली वीकनेस वाज इन द सर्विसेज सेक्टर, जो मार्केट को थोड़ा कंसर्न किया. इट वाज एक्सपेक्टिंग आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद गुड नंबर्स फ्रॉम सर्विसेज. तो सर्विसेज का वीकनेस, फेडरल रिजर्व का कंटिन्यूएशन की हिंट, या दे आर ऑन अ path of rate cut, but they need more evidence, then they will be more sure हो जाएंगे रेट कट के लिए. तो वो मार्केट को एक बूस्ट दिया, मेटल को बूस्ट दिया. एंड ओवरऑल जैसे इन्फ्लेशन इज ड्रॉपिंग मोर इन फास्टर इन यूरोप, डॉलर एक बिड रहा. So dollar remained strong, and despite dollar remaining strong due to China push, US manufacturing push, and due to move into hard assets like gold and silver, metals and commodities have done very well. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि हम लोगों का पोजीशन कमोडिटीज मेटल्स की तरफ जाना चाहिए थ्रू वेरियस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. मैंने अपना पोजीशन और बढ़ाया है जीएसजी में, which is exposing myself to all the global commodities, key important commodities through S&P GSCI index. ये जो exchange traded fund है, it focuses on S&P GSCI index का जो return है उसको replicate करने में. So and I think part of my portfolio और रहना चाहिए था. आपका रहेगा कि नहीं, it is always your decision. We are all the master of our own portfolios. और खुद का ही सुनना चाहिए, दूसरे का भी नहीं. मेरा सुन के भी इन्वेस्ट मत कीजिए. सो दिस वीक का डेटा हम लोग देखेंगे, और इस वीक का जब देख रहे हैं वी आर गोइंग टू लुक एट द 2 स्टार डेटा. 2 स्टार डेटा में दिस वीक इज मेगा वेडनेसडे एंड थर्सडे. So what we are getting here is the core inflation numbers will be coming.
On Wednesday, 10th of April, I'll be holding my live session with the CCMT students, new batch. And this is one of the key important data. जो लोग Canadian dollar trade कर रहे हैं उनके लिए बहुत important Bank of Canada का rate decision. But more importantly जो होगा rather than FOMC minutes is this one. European Central Bank का meeting आ रहा है. We are going to have a session on that day as well for the CCMT students, means master class in advanced commodity and currency. If you go to Elan Markets website, you can find me over there by typing SAA. You'll get me Shanando Dash, and once you find, these are the courses that are associated with. This is the CCMT or the master class in advanced commodity, and which is part of Elan Markets flagship program, multi-asset trading mentorship program. So these 2 days are very important, very power packed days होंगे, तो highly volatility expect कर सकते हैं. यूरोपियन सेंट्रल बैंक किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दे रहा है? आई थिंक इन्फ्लेशन जिस तरह ड्रॉप हुआ है, दे शुड कम्युनिकेट फॉर रेट कट. If they communicate for rate cut, that is going to push the dollar higher, and dollar higher हुआ तो metals going to see some downside pressure. But metals का अपना bullish कहानी चल रहा है. So dollar is one factor for commodities. Strong dollar will always add downside pressure on commodities. इसमें कुछ doubt नहीं. But that strong dollar is one of the factor for commodities. यहाँ पे हम लोग दूसरा ही कुछ notice कर रहे हैं. So we are going to discuss more as we progress in this macro analysis. So next week, I'll consider these two, one event, which is ECB as European Central Bank rate decision and US inflation data, which will be very important for all of us. So last week का जो डेटा देखे थे उसके साथ बॉन्ड मार्केट में, रेट्स मार्केट में जो चेंज हुआ, this is definitely quite alarming. Let's go to the CME website. CME website में मैं probability check कर रहा था. So market is not really sure. Currently it is pricing with a little more than 50% probability there will be only about 3 rate cuts in 2024. Still more than 50%, but it's very tight schedule has come up now. Similar June maybe bond market is now pricing slightly 52-53% probability कि Fed probably एक rate cut करेगा. With the commodity prices going up, Federal Reserve delaying the rate cut and the cycle getting stretched, it is very getting confused by the rate markets. ये जो cycle मैंने बहुत बार बोला, this time it could be different. In this recessionary cycle, the interest rates, gold may behave differently than usually. Gold already proved हुआ, it is significantly bullish. I was right about that. I think interest rate is maybe it is going to be the shock. Means market might wake up to a very rude shock that interest rate may not go down very deep. If the soft landing is there, then the interest rate may not go down, and that is actually could be a very bad news as rates go up. Long-term US rates goes up means global cost of financing, the dollar financing is significantly going up. सो नेक्स्ट जो और ये जो सिर्फ डॉलर के बारे में हम लोग, ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये सारा करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है. गोल्ड सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट ही नहीं, इट इज गोइंग अप अगेंस्ट आईएनआर एज वेल. सो इट इज एन इक्विवेलेंट डेप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर अगेंस्ट कमोडिटीज, एंड दैट इज अ ट्रबल ऑन द स्पेशली इंडियन में वेयर कमोडिटी play a major role in the inflation. So it could be troublesome for the Reserve Bank of India in the coming days. So of long-term bonds, usually we go long in this during the part of the cycle. This time हम लोग bonds में चले जाते हैं, but इस time मैं नहीं जा पा रहा हूँ because of this fundamental. So this is broadly on the probability side. If I ये मेरा favorite macro micro website है, macro analytics का. They are awesome. If you are my student, don't directly purchase. You can get a 67% discount as if you use the special link. And मेरे साथ इनका कोई पैसे का लेना देना नहीं. Means I don't get paid whether you subscribe or not.
but it's an awesome site. I'll always promote them. It's an awesome site. I love the work they have done, and it's always my favorite. So यहाँ पे हम लोग will go to topics. Topics के अंदर I'm going to central bank. Central bank I'm looking at ये हीट हो रहा है. Majority of the central bank rate hike के मोड से में अभी भी are prevailing rates overview. So let's look at the Federal Reserve. Federal Reserve first rate card is with a slight 50% probability is expected to be in June. It can be go both way, June, July. The May communication will be important. Currently, no rate cut is expected in May definitely. कैसा inflation behave करता है, that is now important for all of us. Full year rate cut अभी भी जैसा हम लोग देखे with the probability in CME, still 3 rate cuts is getting priced by the market. At the beginning of the year, market was pricing 150 basis points rate cut, which goes well with a recession like structure. But if we don't have recession, instead we have the opposite, the interest rate shock, then it is a very different kind of scenario हम लोग जिसका बात कर रहे हैं. How has the performance been? जैसे ही communication था dovish broadly from Federal Reserve का chair Jerome Powell, despite some of the strong data, risky assets did well. और ये जो नॉन फार्म पेरोल आया, नॉन फार्म पेरोल एक तो फेडरल रिजर्व का वर्बल लिक्विडिटी पुश था ही, साथ में स्ट्रॉन्ग नॉन फार्म पेरोल एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का हिंट दिया, एंड ऑल द स्टॉक मार्केट ब्रॉडली रिकवर्ड. But last week significant changes हुआ है towards the stock market. Let's look at the performance. We'll look at the world performance in the last 1 month. So it's a mixed picture. Japan, China, some Asia weakness. जिसका बात हम Brazil is weak. So through this we look at the global performance. In the last 1 week, it's a very mixed pictures. Bearish presence were more. आप देख सकते हैं मेरे डैशबोर्ड, it's broadly red के presence ज्यादा दिख रहे हैं. Definitely कुछ है जो stocks जो बढ़ रहे हैं. Some of the big names may be going up, but broadly red. But what happened last day? Last day there was a bullish recovery across the markets. And अपना निफ्टी तो already अच्छा परफॉर्म कर रहा था, so very likely there could be a gap up opening next week as risk sentiment on the last day got a boost. But despite the big jump, S&P 500 was down for the week, and that is something to take note of. So उसमें कौन सा ग्रुप अच्छा किए हैं? I will take a look at large which capitalization के हिसाब से. Once again, last 1 day में मेगा कैप्स आर बैक इन फेवर. इससे पहले हम लोग थोड़ा रोटेशन देख रहे थे कि स्मॉल कैप्स की तरफ यूएस में, but currently once again it's back to mega caps. Is basically the mega caps and the big names which are on a continuous basis rising in the US. Let's look at the futures market. Futures market में overall क्या चल रहा था and how has the performance been? Last 1 week, the coffee, the soft commodities have been doing बहुत ही अच्छा, and मैंने जो position लिया है through exchange traded fund, इसमें इनका reflect होने वाला है. So it is a good position. एक जो बड़ा है that is VIX. Last 1 week, VIX has significantly gone up. सिल्वर हैज आउटपरफॉर्म. हम लोग जो सिल्वर में पोजीशन बढ़ाए थे वो भी अच्छा गया है. मेटल्स हम लोग डेरिवेटिव ट्रेड किए थे. वी डिड नॉट एक्सपोज आवरसेल्फ टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. मेटल्स हैव डन वेल, एनर्जीज हैव डन वेल. मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स जो हम लोग डिस्कस किए थे बुलिश कमोडिटीज, दे हैव डन वेरी वेल. इंटरेस्ट रेट का करेंसी, आरबीआई स्पॉइल्ड आवर मूड इन इंडिया. आरबीआई showed us that कि हम लोग जो कर रहे थे इट वाज ऑलरेडी ऑन गुड फेथ, बट एक्चुअली स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग 2014 से जो बढ़ा दैट वाज एक्चुअली इलीगल. गवर्नमेंट जो था इट आल्सो इन गुड फेथ consumed the illegal taxes on those trades. So we are in a very difficult confusing situation here in the forex market in India. RBI has extended for 1 month, but it hardly matters. It does not matter if we don't have a continuous and a regular market. This 1 month it will do nothing.
जो डाउन परफॉर्मेंस हुआ है, some commodities like oats, cotton is very much close to the demand in China, so that's one bad news. But overall cotton, feeder cattle, and broadly the indices, the bonds, they have not done well, means capital market assets have not done well. And this is बहुत ही natural था, because हम लोग एक stagflation situation में, मतलब ग्रोथ स्टैग्नेंट एंड इन्फ्लेशन भी है. इन स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में यूजुअली कमोडिटीज आर द वन व्हिच डू वेल. सो कमोडिटीज हैव बीन डूइंग प्रीटी वेल, एंड दैट्स हमारे लिए गुड न्यूज. लेट्स लुक एट द forex will look at the performance. इसमें सारा currency available नहीं है, but we'll have the look at the major currency. Dollar was on the middle, no, nothing special. Australian dollar was significantly up, followed by New Zealand dollar. Risk comeback and commodity rising की वजह से they are benefiting. Euro and GBP also benefited क्योंकि dollar थोड़ा downbeat था later in the week, because Chair Powell अभी भी hint दे रहे probably we are going for a rate cut in June. So let's go with that. Now I will move to एक बार कॉमन मार्केट्स को देखेंगे, क्योंकि इसमें सारा फॉरेन एक्सचेंज बड़ा मार्केट है मैक्रो माइक्रो का फिनविज से. सो लास्ट 1 week परफॉर्मेंस, 1 week Hungarian forint, Turkish lira, South African rand, Australian dollar, New Zealand dollar, euro, these are the currencies broadly have done well. Brazil में प्रॉब्लम चल रहा है both in the stock market and that is getting reflected in the currency. एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज आर बैटर्ड, स्पेशली एशियन इमर्जिंग मार्केट. And when dollar strong, commodity strong, Asia, which is highly dependent on commodities because our volume of people agree commodities, so here it is making a factor where we can see some inflation, where we are seeing some monetary outflows as well. So here India, we are still doing better, but as a trend we should be careful and keep a look at the foreign exchange trend in the Asian market. साथ में हम लोग देखेंगे स्टॉक्स, मतलब इंडिसेस की बात चल रहा है लास्ट 1 week. This is the Turkish index XU100. This is Russia. So overall some of the Sensex have done well, so we are on the positive side, but बहुत सारे indices on the negative side, especially Nikkei में जो हम लोग exit कर गए थे, we are safe. Nikkei did not went significantly down last week. बहुत सारे international position we have hit the exit. So majority these are not the stocks we are really look at, nor even not the Turkish exchange traded fund. हम लोग बहुत specific exchange traded fund में रहते हैं. If we not then I'll not prefer not take any trade rather than look for go so much global, that much we will avoid. इसके अलावा जो दिख रहा है कमोडिटीज में हम लोग जाएंगे टू क्लियरली लुक एट द पिक्चर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द कमोडिटीज लास्ट 1 week. कॉफी, कॉपर, कोकोआ अभी बढ़ा, बट कोकोआ का जो अस्टोनिशिंग राइज था वो थोड़ा हॉल्ट हुआ है. इट रीच्ड 10,000 लेवल, $10,000. सो वो लेवल रीच होने के बाद इट हैज स्टॉप्ड अ बिट now, but other commodities have started firing up. Coffee, so majority of the commodities are doing well. जो अच्छा नहीं दिख रहा है, which is among the commodities will be a concern, is the iron ore. Iron ore is the worst performer. Iron ore is very much linked to China and steel demand. So if steel demand is not recovering, that means China infrastructure is not recovering. Iron ore ka down performance is something to take note of. It could be supply issue. We are not too much focusing on iron ore as a whole, but this could be supply issue. But overall iron ore ka itna fast niche jana is not a very good sign for a growing steel industry. And that's one warning from the Chinese side. Next हम लोग जो देख रहे हैं, I think broadly it is done. And we'll go to look at our geopolitical picture. Geopolitical picture हम लोग देखेंगे. Geopolitical picture के लिए I come down lower. Geopolitical risk, global geopolitical risk
let's look at it is going down, so relatively stability दिख रहा है. Geopolitical risk index from macro micro is going down, and this index कैसे ये बनाया जाता है, this definition is overall there. So risk threats मतलब verbal threats की बात, verbal threats are going down, but world geopolitical risk index में एक action का risk रही जा रहा है. Recently there has been attacks on इस week. I don't think this data is updated properly. If it gets updated, it may see updated means it's not the latest, it's not as encountered. So once it does, I think there could be an uptake. उसमें एक अटैक हुआ है दमास्कस मतलब सीरिया में ईरानियन एम्बेसी, जहां पे एलिजेडली आई थिंक बेन इजराइल को दोषी ठहरा जाए या फिर कल्पेबल ठहरा जा रहा है. May all the even the United States has condemned any kind of such attacks. Now Iran has vowed to retaliate. Iran has there is a strong risk. US has issued warning to that Iran may retaliate within this week or the week next. As per intelligence report, means overall इसका मतलब है कि global crude oil market has थोड़ा और heat हो गया. So this is a positive crude oil news, और वो Brent crude oil को pushed and made stable above $90. Brent is holding above $90, and ये सारे geopolitical events in the Middle East, heated up Middle East is pushing the crude oil price. इसका वार्निंग हम लोग दिए थे कि देयर कैन बी अ सडन शॉक इन कमोडिटीज व्हिच विल पुट इन्फ्लेशन हायर, और हम लोग का जो इंटरेस्ट रेट शॉक का सिनेरियो इट विल कम अलाइव. सो उस तरफ थोड़ा मोड़ लेते हुए दिख रहा है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट ट्रेडर्स इनसाइड में हम लोग जियोपॉलिटिकल रिस्क सेक्शन में थे. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द मेरीटाइम शिपिंग इंडस्ट्री की जियोपॉलिटिकल के बारे में और थोड़ा कंफर्मेशन के लिए. एंड रिगार्डिंग चाइना, इन चाइना द फ्रेट इंडेक्स, शिपिंग इंडेक्स इज फॉलिंग डाउन स्टेडीली. सो दिस इज नॉट अ गुड डिमांड न्यूज, बट इट कुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द सिचुएशन कि ये जो ट्रबल था रेड सी या सुएज कैनाल में वो स्टेबलाइज हो रहा है. दैट कैन बी वन थिंग. बट अभी भी दिखा जाए तो सुएज कैनाल, इफ आई टेक लुक एट द लेटेस्ट राउंड ऑफ डेटा जो अवेलेबल है, सुएज कैनाल द सिचुएशन हैज नॉट रियली रिकवर्ड. इट इज नॉट गोइंग डाउन सिग्निफिकेंटली फार्दर. अगर इतना भी और नीचे नहीं जा रहा है ये हम लोग बोल सकते हैं, बट it is way far from being stabilized or previous top. Unless more and more ships starts passing through the Suez Canal, we cannot say that yes the things have stabilized in the Red Sea. So अभी भी मेरे हिसाब से ट्रबल चल रहा है, और ये जो शिप्स है इनको पास करना पड़ रहा है केप ऑफ गुड होप से. केप ऑफ गुड होप मतलब पूरा अफ्रीका. लेट्स लुक एट द मैप. चलिए ग्लोबल मैप को देखते हैं. सो इसमें हम लोग देख रहे हैं वी आर लुकिंग एट सुएज कैनाल. सुएज कैनाल इजिप्ट. दिस इज द सुएज कैनाल एंड दिस इज द रेड सी. दिस इज द रेड सी. तो इसमें सॉरी दिस इज द रेड सी. तो इसमें पास नहीं हो पा रहे. दिस इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. सो शिप्स अब क्या कर रहे हैं, दे आर पासिंग थ्रू द लॉन्ग रूट्स and passing through the Cape of Good Hope and finally crossing into the Europe. There is a risk of piracy. It's a very long route. It's a more risky route than the Suez Canal route. So the risk has not really recovered completely, but वो shipping rates में नहीं दिख रहा है in China. That means China में अभी भी superb recovery है, ये हम लोग कह नहीं सकते. इसमें एक डेवलपमेंट जो हुआ है दिस वीक, दैट इज सऊदी अरेबिया हैज इंक्रीज्ड इट्स क्रूड ऑयल सेलिंग प्राइस टू एशिया. नाउ इट्स $2. मींस व्हाट इज द दुबई ओमान क्रूड का जो प्राइस चल रहा है
उसके ऊपर और $2 पे करना पड़ेगा टू गेट द सऊदी अरेबियन क्रूड. So this is usually a sign there is a strong demand for crude oil in Asia. This is the second consecutive increase, and this can be a very early signal that China could be coming back. So that is another commodity positive news. और लास्ट जो हम लोग कवर करेंगे, आई थिंक वी हैव ब्रॉडली जो लोग कवर करना कर चुके थे इस टाइम. The gold is behaving differently. This is one chart I'm very much closely watching. The relationship has broken down for the past 18 months. The yield and the yield inversion has been the highest ever record. There are a lot of records which have been broken. So gold is significantly behaving differently, which is obviously natural. As we saw, the central banks have increased the acceleration of their purchase. After the latest Russia debacle, जो मैंने warn किया था, is a very bad thing what was did by the US and European Central Bank. They confiscated Russian reserve, and lot of now central banks globally has started diverting some of the wealth towards gold. गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है, आई विल गोइंग टू डिस्कस एज वी प्रोग्रेस फर्दर. अब हम लोग आ जा रहे हैं चार्ट पे. इसको आप लोग जानते हैं, दिस इज माय मेन ट्रेडिंग सेटअप, फाउंटेन ऑफ गोल्ड. दिस इज अ मल्टी एसेट trading setup. I can choose whichever I want. So I will do fountain of gold, the mother setup for now. Or let's do index futures. उसमें मेरा template already बनाया हुआ था. Index international. And majority of the index we are able to see there have been weakness. बहुत सारे index से हम लोग का exit हो चुका है. तो once again मैम to make sure कि मैं latest वाला setup इस्तेमाल कर रहा हूं, I will go to indicators. Once again apply SD Rainbow Wave version 1. Whenever I remove and apply, I can get always the latest updated setup. S&P 500 has given the full exit, और मैं अपना जो exchange traded fund SPY, I have fully exited this trade. I am no longer in S&P 500. Dow और Nasdaq से हम लोग पहले ही मूव कर गए थे. If you have been following me, Dow में further bearish. Now I have taken a bearish position in Nasdaq via the exchange traded fund SQQQ. I was going through I think there are no reservation for, I'm not fully sure. I've tried this. So SQQQ passed through the order. There was no issue. So, and I was reading the regulations, like what kind of exchange traded funds we can buy. There was no specific mention of exchange traded funds. It was very specific what we can't do. We can't do any kind of margin trading margin trading. Means any kind of margin short we cannot do, but this kind of exchange traded fund is a cash trade. So with a cash trade leverage fund, there are ways to take a bit of leverage bit, but within the exchange traded fund का purview. So Nasdaq का जो स्पेशली जो लोग आउटसाइड है, आप लोग भी शॉर्ट, आपका कोई इशू है ही नहीं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन दुबई. So SQQQ, this is something to get note of. Bearish छा जा रहा है, bear market में, और one of the reason is bearishness को जो fuel कर रहा है, that is the bond market. Bond market is now realizing जो risk का मैंने highlight कर रहा था कि long term interest rate can go up. Long term interest rate, we are seeing a back move. We saw strong bear steepening also last week. So India did not get affected, though we got a big recovery on the last day. But overall interest rate going up, this is a bad news. And usually interest rate jab नीचे जाता है, then we go for long-term bonds buying. But currently with interest rate going up, I'm not into long-term bonds. I'll wait. I have been warning this. There is a strong risk going up.
इसमें दो चीज हो सकता है, फेडरल रिजर्व कैन कम विद सरप्राइज रेट कट ऑन मे एंड वंस अगेन थिंग्स टर्न अ बिट ऑन द डाउन साइड, things turn a bit dovish and we close the ये जो गैप चल रहा है, जो ये जो साइकिल है, एवरी टाइम जो साइकिल बूम एंड बास्ट के थ्रू जाता है वो एक्सटेंड होते जा रहा है, साइकिल एक्सटेंड होते स्ट्रेच्ड होते जा रहा है. So Fed can do something, or otherwise market is ending the cycle by pushing the long-term interest rate higher. And this is one of the factor which can bring down the global recession. And I'll be closely watching this interest rate factor. So long-term interest rate, jahan pe wherever I look at now, background is bullish as well. So if I want to go exchange traded fund, I'll go inverse treasury where I can go for a short treasury trade. So bonds are long-term bonds. Currently, I'm more bearish on them as they are turning up. This is a bad news if as per the rainbow structure, मतलब fundamentally it's a mixed scenario था कि Fed rate cut करेगा, then it may not be able to go up. But जैसे ही commodity ऊपर जा रहा है, we have seen wages still higher. There is now market is realizing that inflation and interest rate can remain higher, and it is as per rainbow structure can target the 5% level. I will really be very concerned with the long term rates. Short term rates is going up, but it cannot go up significantly because the Federal Reserve it's stuck. Unless Federal Reserve hikes rate, it will be very difficult to take the short term rates push higher. But if you are looking at a very high inflation scenario, then even then short term rates can go up more higher, like more towards the 5.16%. Till the next May meeting of Federal Reserve, this will remain a key focus of mine. इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे जो जर्मन इंटरेस्ट रेट, इसमें it was more bearish last week, but they are also trying to come back. Overall level of interest rate is long-term interest rates are again on the rising. This is a very bad news for long-term bonds. So long-term bonds may exposure for capital gain. No, this is not the time for that. This is the bad news. और इसके साथ साथ हम लोग स्पेशली यूरोप का जो इक्विटी है वहां से भी हम लोग फुल एग्जिट हो गए. विथ येलो बैकग्राउंड आई फुल्ली एग्जिट ट्रेड. सो इटली में बहुत बढ़िया सुपर प्रॉफिट. यू कैन सी कहां से हम लोग बात किए थे, एक आईबेक्स 35, इससे भी हम लोग निकल गए जैसे शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेरिश हुआ एंड द बैकग्राउंड टर्न येलो. ऑसम मूव इन स्पेन एज वेल. साथ में बाकी जो यूरोपियन इंडेक्स उससे भी हम लोग फुल एग्जिट हो चुके हैं. सो देयर आर आई एम नॉट प्लानिंग, रादर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिख रहे हैं. जर्मन देखे, फ्रांस देखे, स्पेन, इटली, वेरेवर वी आर लुकिंग, इट इज नो लॉन्गर टाइम टू रिमेन लॉन्ग. मैं लॉन्ग नहीं रहूंगा. एसपीजीएम जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड टर्न येलो, आई विल नो लॉन्गर रिमेन लॉन्ग. फिर से जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मार्केट शॉर्ट नहीं हो गया. भले ही if you look at the CAC 40, it's a background red, strong sell signal गिरा भी है, but if you look at the probability, it is still mixed and preferred trades are still buy breakout and buy support. So selling जो आ रहा है, it is not strong enough. ट्रेड लिया जा सकता है शॉर्ट के तरफ, but छोटा क्वांटिटी, and it could be rather later on again buying chance. तो अभी तक हम लोग मेजर सेल में कहीं पे मूव नहीं किए, but it is a very good chance to book the profits and take money home on our international portfolio. So इसके साथ हम लोग look at the commodities. Commodities में हम लोग का ट्रेड बहुत ही बढ़िया गया है. If you look at zinc, what a comeback. ये डेली के बाद it has reached our target. I have taken partial profit. वो स्टूडेंट जो आप लोग जानते हैं, मैंने बोला था ग्रुप में, I'm going to take the profit home. Partial profit. Copper is going well, so I'll still remain bullish on copper. Partial profit booking किया हूँ with 125 minutes chart.
मौका मिला था अगेंस्ट एंट्री का, बट दिस विद द ग्रीन कैंडल आई अवॉइडेड एज शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज स्टिल बियरिश. गोल्ड सिल्वर एक पार्शियल एग्जिट लुक दिखा रहा था, बट दैट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड विद नॉन फार्म पेरोल. So I have gone more into gold exchange traded fund, gold futures, and so gold and silver ka exposure I have increased, and they are going up. Gold and silver ko main target kar raha hu because this is a very long term break. I'm focusing more on the daily chart rather to remain in the position. 125 का इस्तेमाल कर रहा हूं more to make an entry, not to make an exit. एग्जिट के लिए मुझे एक मिनिमम रेड कैप्स का इंतजार करूंगा. व्हाट अ मूव इससे चल रहा है. औसम 70,000 रीच कर चुका है, और हम लोग स्टार्ट किए थे 49,000 से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में बिल्ड करना. सो व्हाट अ मूव, एंड विद अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एज वेल, उसमें भी हम लोग मूव किए हैं. Silver, I'm very much now bola tha bullish, and silver has gone bullish. Silver is more volatile. It may see a bit of struggle around strong level reach ho chuka hai. If you look at a very strong level reached, so there can be some struggle in silver, but overall I'm bullish on silver. Silver, I'm bullish more on an this is reason is more fundamental than technical, because I am seeing basically thematically sector rotation into hard assets like gold. And when gold gets benefited, silver ko bhi thoda benefit milta hai. Silver is very cheap compared to. So this was a very good move, और हम लोग अच्छा गेन पे भी बैठे हैं. So silver is very good. Crude oil में I have partially exited because it reached ये जो मेरा लेवल था in if you look at the international oil. Crude oil is a volatile counter, so I always have to be careful while crude oil. So crude oil it did reach and थोड़ा correction दिखाया था this candle. So I partially profit book, and later crude oil jumped again. So now currently I am 50% now booked in crude oil. I have not further increased position. This is a very important resistance. Anything could have happened over the weekend. Commodities में weekend risk बहुत रहता है. करेंसी में वीकेंड रिस्क उतना नहीं रहता है. करेंसी में अगर मार्केट हमारा जल्दी क्लोज हो रहा है इसीलिए होता है, या अब तो क्या होगा फ्यूचर पता नहीं. सो दिस currency does not have a weekend risk, whereas commodities do have weekend risk. So now we are looking at natural gas is in a not a very bullish bearish, it's a mixed market situation, और long term trend में अभी भी bearish trend के अंदर ही है. It's not a bullish, it's a mixed market situation. ना bull भारी हो पा रहा है, ना bear भारी हो पा रहा है. सो कॉमोडिटी में एक मिक्स पिक्चर. करेंसी हम लोग जरूर देखेंगे, ये मेरा फेवरेट काउंटर है. सो डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. डॉलर इंडेक्स पावल के बाद जो करेक्शन मिला, इट कुड नॉट सस्टेन. ये इंपॉर्टेंट लेवल था, फ्लैट लाइन इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर इट कुड नॉट सस्टेन. So next is we will look at the Euro USD. Euro USD after sell off tried a comeback, did not work. Mixed market currency. Anyone trading from outside Euro USD, GBP USD बहुत ही mixed market और zone में है. It's better to avoid trading unless more confirmation and clarity comes. एंड आई थिंक उसके लिए दो डेटा इंपॉर्टेंट होंगे. दो डेटा, एक डेटा दैट इज इन्फ्लेशन, एंड थर्सडे का यूरोपियन सेंट्रल बैंक. या निफ्टी का एनालिसिस हम लोग अलग से कर चुके हैं. आई होप यू विल वॉच दैट वीडियो. ऑल द बेस्ट. यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे आज का संडे का एनालिसिस. वी हैव डिस्कस ग्लोबल पिक्चर, वी हैव डिस्कस हाउ वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड, कौन सा सेक्टर, कौन सा एसेट क्लास. So all the best to you, and thank you very much for watching this video. Once again, happy trading.